राजकीय महारानी सुदर्शन महाविद्यालय बीकानेर के बीएससी पार्ट सेकंड के सभी छात्राओं का इस कक्षा में स्वागत है। आज हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे हम प्रतिदिन कितने ही संक्रमण तत्व का उपयोग करते हैं। टन्स ऑफ यूजफुल आइटम्स राइट फ्रॉम द किचन कटलरी ships to the jewelry have transition elements. To know more about these elements, let us have a closer look at their various properties. संक्रमण तत्व के सामान्य विशेषताएं तथा गुणों में परिवर्तन। Atomic and ionic radii. The atomic radius is defined as the shortest distance between the atom's nuclei and the outermost shell of the atom. किसी परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन एवं नाभिक के मध्य की दूरी को परमाणुवीय त्रिज्या कहते हैं। The atomic and ionic radii of the transition elements decrease with the increase in atomic number from left to right in a period, that is from group 3 to group 6, due to the poor shielding offered by the small number of d electrons. Those placed between groups 7 and 10 have somewhat similar atomic radii, and those placed in groups 11 and 12 have larger radii. This is because the nuclear charge is balanced out by the electron repulsions. हम देखते हैं कि बढ़ती हुई परमाणु संख्या के साथ परमाणुवीय त्रिज्या में कमी आती है। बीच के तत्वों में परमाणुवीय त्रिज्या लगभग स्थिर रहती है और अंत में बढ़ने लगती है। किसी परमाणु की त्रिज्या या आकार दो कारकों पर निर्भर करता है। Thus, the atomic size of an atom depends upon two factors. First, attraction between nucleus and outer electrons. बाह्य इलेक्ट्रॉन्स व नाभिक के मध्य आकर्षण। Greater the attraction between the nucleus and outermost electrons, smaller will be the atomic size. The attraction of nucleus depends upon the number of protons. नाभिक का आकर्षण बल उसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। यदि मुख्य क्वांटम संख्या का मान समान है तो परमाणु संख्या बढ़ने के साथ नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, जिससे उसका आकर्षण बल बढ़ता है एवं परमाणुवीय आकार कम हो जाता है। सेकेंड फैक्टर, शील्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव। इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स द इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू penultimate shell, hence the electron cloud density of inner shells increases, which increases the shielding effect. The repulsion between inner electrons and outer electrons is the cause for the increase in atomic size. This effect of the inner electrons is called shielding effect. They shield the attraction of nucleus with outer electrons. In transition elements, first there is attraction between nucleus and outer electrons, therefore size decreases. In the middle, two factors balances each other, so nearly constant value, and further shielding effect increases, therefore atomic size increases with the increase in atomic number. इस चित्र में न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन और आउटर इलेक्ट्रॉन्स और इनर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन को दिखाया गया है। The shielding effect is the decrease in attraction between an electronic atom. There is very little difference in the atomic size of the elements of second and third transition series, and it is due to lanthanide contraction in lanthanides. चित्र में हम देखते हैं कि सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के परमाणुवीय त्रिज्या में बहुत कम अंतर पाया जाता है या बहुत कम अंतर होता है, और ये लैंथेनाइड संकुचन के कारण होता है। Due to the shape of 4f orbitals,
The shielding of 4f electrons by another is imperfect. Thus, at each increase, the effective nuclear charge experienced by each 4f electron and also the outer electrons increases. This causes reduction in the size not only the 4f orbitals but in the size of the entire atom as well. Elements at the end of the series has large size due to the filled d orbitals, and there is same periodicity is found in ionic size. Ionization potential, Ion Vibhav. Ionization potential refers to the amount of energy that must be supplied to an element for the removal of a valence electron. The greater the effective nuclear charge acting on the electrons, the greater the ionization potential of the element. किसी तत्व की आयनन विभव उस ऊर्जा को प्रदर्शित करता है जो उस तत्व के एक गैसीय परमाणु के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को नाभिक आकर्षण से अनंत दूरी तक ले जाने के लिए आवश्यक हो। अतः कोई इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक के साथ जितने प्रबल आकर्षण से बंधा हुआ होगा उस तत्व का आयनन विभव उतना ही अधिक होगा। The ionization potential of transition elements increases from left to right in a period. Atoms with smaller radii tend to have greater ionization potential than those with relatively larger radii. The ionization energies of the transition metals increases while moving along the row due to the increase in the atomic number. Density, Ghanatva. The transition elements are much denser than the S block elements and show a gradual increase in density from scandium to copper. This trend in density can be explained by the small and irregular decrease in metallic radii coupled with the relative increase in atomic mass. Third transition series elements have very high density and the small atomic radii, close packing of spheres, high atomic weights combine to impart high density to the transition elements. Melting and boiling points of the transition elements are both high in comparison to main group elements. This arises from strong metallic bonding in transition metals which occurs due to delocalization of electrons facilitated by the availability of both d and s electrons. Reactivity, क्रियाशीलता, संक्रमण तत्व की क्रियाशीलता बहुत कम होती है. The transition elements have tendency to remain inert. The reactivity of these elements decreases from first transition series to the third transition series. The elements of third transition series are least reactive among the transition series because of the small size, high ionization potential, very high heat of sublimation and low heat of hydration of the metal ion. Thank you.